Good morning, class first. Class, this is your maths book, and today we'll start chapter 11, Time. 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 So, class, here you are seeing a clock, okay, which tell us the time. Time means the process to know how long something takes for that work, okay, the timing of that action. And we know time in hours, minutes, days, weeks, and months. Okay, so in this chapter you will learn about the time. So the first thing is clock, CLOCK, clock. The clock tells the time. The face of a clock is called the dial. Class, here this is the clock and the face of the clock is called dial. ये आप क्लॉक देख रहे हो ना, और जो सामने इसका फेस को क्या कहते हैं, डायल कहते हैं. एंड द डायल हैज़ नंबर्स 1 to 12 मार्क्ड ऑन इट, एंड ऑन हियर ऑन इट्स फेस द नंबर्स 1 to 12 मार्क्ड इट. ओके, इसके फेस पे क्या होता है, 1 से 12 तक के नंबर इस पे राइट किए होते हैं, विच टेल्स द टाइम. इसी से हमें टाइम का पता चलता है. अ क्लॉक हैज़ 2 hands. How many hands? 2 hands. One is longer and second is shorter. You can see in this picture, this one is shorter hand and this one is longer hand. The longer hand tells the minutes and is called the minute hand. Okay, this longer hand is called minute hand and it tells the minute. ये क्या कहते हैं, इसको minute hand कहते हैं. और ये क्या बताता है, मिनट बताता है कि उस टाइम में मिनट क्या हो रहे हैं. The shorter hand tells the hours and is called the hour hand. This second one, which is on 3, this is called shorter hand, okay, which tells the hours. ये shorter hand है ना, छोटा hand, तो क्या बताता है, ये hours बताता है. इसको क्या कहते हैं, hour hand कहते हैं. Okay, so a clock has 2 hands. One is longer and second is shorter. Shorter hand tells the hours and longer hand tells the minutes. Look at this clock. The longer hand or the minute hands point to 12. This longer hand points to 12. किसकी तरफ है ये, किसकी तरफ point out कर रहा है, 12 की तरफ. The shorter hand or the hour hand points to 3. Yes, this one, this shorter hand points to 3. किसको बता रहा है, किसको indicate कर रहा है, 3 को. So this means that the time is 3 o'clock. What is the timing? 3 o'clock. If the longer hand is on 12 and shorter hand is at any number, so it is called the full timing, complete timing. Okay? जब भी बड़ी सुई जो है ये longer hand 12 पे हो और छोटी सुई किसी भी नंबर पर, सपोज यहाँ पे से 3 पे है तो 3 o'clock, सपोज करो 5 पे होती तो 5 o'clock, 7 पे होती तो 7 o'clock. तो जिस भी नंबर पे ये छोटी सुई शॉर्ट हैंड होती है वो वही टाइमिंग, कंप्लीट टाइमिंग होती है. उसी को कहते हैं कि इतना टाइमिंग हो रहा है, इतना o'clock हो रहा है. बस बड़ी सुई जो है लॉन्गर हैंड 12 पे होनी चाहिए. 3 o'clock is written as 3:00. ओके, इन रिटन वे विल राइट लाइक दिस. हम लोग जब राइट करेंगे ना, जैसे अगर बोलना है तो हम लोग 3 o'clock बोलते हैं, ठीक. लेकिन अगर राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, 3:00. ओके, दिस 2 points कॉल्ड कोलन. ये 2 points देख रहे हो ना, एक ऊपर एक नीचे, इसको कौन सा साइन कहते हैं, कोलन कहते हैं. राइट डाउन द टाइम शोन इन द फॉलोइंग क्लॉक्स. हियर देयर आर 2 clocks. यू हैव टू राइट द टाइमिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू द हैंड. जैसे भी हैंड बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको टाइमिंग बताना है. जस्ट लाइक द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 12. ओके, हियर यस ना, जो छोटी बड़ी सुई है लॉन्गर हैंड है, किसको वो पॉइंट्स कर रही है, 12 पे ना. द आवर हैंड पॉइंट्स टू 9. दिस शॉर्टर हैंड पॉइंट्स टू 9. छोटी सुई किस पे कर रही है, पॉइंट 9 पे कर रही है ना. सो इट मीन्स द टाइम इज 9 o'clock. What is the timing? 9 o'clock. It is written as 9:00. Okay. Next clock. The minute hand points to 12. Yes, see here in this clock. Longer hand, minute hand is at the 12 and the hour hand points to
4. Yes? Yes or no? Yes, na? So the timing is 4 o'clock. What is the timing? 4 o'clock. It is written as 4:00. Okay? It is clear, class? When the longer hand is points to 12 and shorter hand is at any number, point any number. So the timing is 4 o'clock, 5 o'clock. जिस पे भी छोटी सुई इंडिकेट कर रही है, शो कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है, तो उसी पे वही टाइमिंग वो होता है. ओके, नेक्स्ट पेज. Here the book exercises. Read the clock face and circle the correct time. Class, in this question there are 3 clocks, 1, 2, 3 and 3 options also. You have to see the clock and circle the correct timing. Okay? Now in this, the first clock is the longer hand 12 and shorter hand 7. So it means the timing is 3 o'clock, 7 o'clock or 5 o'clock. 7 o'clock na, the shorter hand is points to 7. So you will make a circle in 7 o'clock. Next, this clock, this is a clock. Okay, the longer hand at points to 12 and shorter hand 2. So it means the timing is 10 o'clock, 12 o'clock or 2 o'clock. Which one is correct? 2 o'clock na. Here the shorter hand is points to 2. So 2 o'clock is correct. So circle it. Next, third clock. Here the longer hand points to 12 and shorter hand points to 5. Yes na. So the timing is 5 o'clock, 3 o'clock or 4 o'clock. Which one is correct, class? 5 o'clock na, because the shorter hand points to 5. So 5 o'clock. Make a circle in the 5 o'clock. Okay. So this question is completed. Next question. Put a tick for the correct timing and a cross for wrong timing. Okay. Class, here there are some clocks. You have to see the timing and then put right or wrong according to the timing. Okay. Just like the first clock, the timing is shorter hand points to 8 and longer 12. So it's 8 o'clock na. So here 8 o'clock. Right na? Timing is right na according to the clock. जो clock में जो बना हुआ है, जो उसके hands हैं, उसके according time right है ना. So here you will put tick mark. Correct. Second, here the longer hand 12 and shorter hand 9. So the timing is 9 o'clock and here it is written 7 o'clock. So it is wrong na. So cross it. Third, longer hand 12 and shorter hand 11. So the timing is 11 o'clock and here it is written 9 o'clock. So it is wrong na. Here the timing is 11 and here 9 written. So it is wrong. Cross it. Next, this clock number 4. The shorter hand and longer hand both points to 12. So it means 12 o'clock. जब दोनों सुइयाँ, दोनों जो हैंड हैं, लॉन्गर और शॉर्टर दोनों 12 पे है ना, तो टाइमिंग क्या हो रही है? 12 o'clock हो रही है. Okay. And here it is written 12 o'clock. So this one is correct na. Here also 12 and here also 12. So you will tick mark. This is correct. Next, longer hand 12, shorter hand 7. So timing is 7 o'clock. What is the timing? 7. And here it is written 8 o'clock. So this one is wrong na. So cross it. Okay. Here 7 and here 8. So wrong answer हुए ना. So cross कर दीजिए. Next clock, longer hand 12 and shorter hand 1. So timing is 1 o'clock na, and it is written 1 o'clock. So this one is correct. Okay. So this question is completed. Next page. Here, next question. Write down the time shown in the following clocks. One has been done for you. Class, in this question you have to write the timing. Okay, that what is the timing at this clock. जो clocks बने हैं यहाँ पे, उसमें जो भी timing हो रही है वही आपको write करना है. Just like number first, longer hand 12, shorter hand 6. So it means it's a 6 o'clock. Okay,
यू हैव टू राइट इन बोथ वे, दोनों तरीके से राइट करना है। जितनी भी टाइमिंग हो रही है तो दोनों तरीके से, ओ क्लॉक में भी और कोलन 0 में भी। नेक्स्ट क्लॉक, हियर द लॉन्गर हैंड 12 and shorter hand 3, so it means it's 3 o'clock. What is the timing? 3 o'clock. Next, here longer hand 12 and shorter hand 4, so it means 4 o'clock. What is the timing? 4 o'clock. Okay. Next, longer hand 12, shorter hand 8, so it means what is the timing? 8 o'clock. Okay. What is the timing? 8 o'clock. Next, longer hand 12, shorter hand 11, so the timing is 11 o'clock. Okay. Next, last one is longer hand and shorter hand both are on 12, दोनों के दोनों hands 12 पे है ना, so the timing is 12 o'clock. What is the timing? 12 o'clock. Okay. And this question is completed. Next question, draw the hands of the clock to show the timing. Here in this question we have to draw hands, okay, according to the timing. क्लास इस क्वेश्चन में क्या करने हैं, हमें हैंड्स बनाने हैं, शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड, जैसे भी टाइमिंग दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग. जस्ट लाइक नंबर फर्स्ट, टाइमिंग इज 1 o'clock, सो विल ड्रॉ अ लॉन्गर हैंड एट 12 एंड शॉर्टर हैंड 1. एक लंबी सुई बनाओगे 12 की तरफ और एक छोटी सुई जो शॉर्टर हैंड है वो किससे बनाओगे? 1 पे. Then the timing is 1 o'clock. Next, 6 o'clock. So we'll draw a longer hand at 12 and shorter hand 6. Okay. So the timing is 6 o'clock. एक छोटी सुई किससे बनानी है क्लास? 6 की तरफ, और जो बड़ी सुई है लॉन्गर हैंड वो किससे बनाना है? 12 की तरफ. So the timing is 6 o'clock. Next, 9 o'clock. So draw a longer hand to 12 and shorter hand 9. So timing is 9 o'clock. Next, 4 o'clock. So longer hand 12, shorter hand 4. So timing is 4 o'clock. Next, 3 o'clock. So longer hand 12 and shorter hand 3. Timing is 3 o'clock. Last one, 10 o'clock. So longer hand 12 and shorter hand 10. So timing is 10 o'clock. Class, in this question you have to draw only 2 hands according to the time. Okay. Shorter with the given time and longer hand to 12. जो लॉन्गर हैंड है किससे बनाना है? सब में 12 पे ही राइट करना है आपको, क्योंकि ये फुल टाइमिंग है ना, कंप्लीट टाइमिंग 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. ठीक. और जो भी नंबरिंग दी हुई है, जो भी टाइमिंग दी है, उस पर शॉर्टर हैंड की तरफ बनाना है. ओके. So class, it's enough for the day. Continue the same chapter tomorrow also. So thank you.